Hi guys, welcome to another episode of Writings on the Wall where I talk about my favorite writings from the world of internet. आज मैं ऐसे एक और राइटर की बात करना चाहता हूँ. मैं थोड़ा जोन में आने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई नो हाउ पैशनेट आई गेट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर राइटर. थोड़ा सा वो कुछ लोगों के लिए ऐसे हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है मेरी एनर्जी देख के. टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट सैम ऑल्टमैन, द गाय बिहाइंड ओपन एआई, द गाय बिहाइंड ChatGPT. सैम ऑल्टमैन को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और अभी पिछले 1 साल में द वर्ल्ड हैज गॉटन टू नो ऑफ हिम बिकॉज ऑफ ChatGPT, GPT-4, लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट पे अपीयरेंस. बट माई एल्डर ब्रदर recommended me to watch his lecture series on the Stanford channel, How to Start a Startup, many years back, which has also helped me build Chalchitra. वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं notes बनाता हूँ. But there is a very underrated thing about Sam Altman and the world doesn't talk about it enough. It's his writing abilities. ये बंदा इतना क्लियरली लिखता है, इतना कंसाइज मैनर में लिखता है. आई जस्ट कीप रिविजिटिंग हिज राइटिंग्स whenever I am in a low phase, whenever I am feeling डाउटफुल कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए. मैंने बहुत साल पहले एक ब्लॉग पोस्ट लिखी थी व्हेन इन डाउट. सो उसमें मैंने 10-20 चीज़ें लिखी थी कि मैं जब एंग्शियस होता हूँ या डाउट में होता हूँ तो मैं कौन सा गाना सुनता हूँ, कौन सी किताब पढ़ता हूँ. बट अगर मैं आज उसको 2024 में अपडेट करूँ तो वन ऑफ द थिंग्स विच विल बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी सैम ऑल्टमैन के ब्लॉग पोस्ट. तो सैम ऑल्टमैन भाई बहुत रेयरली एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और जिस दिन मैंने सोचा था ये वीडियो बनाऊंगा, आई थॉट मैं इनकी एक ब्लॉग पोस्ट के बारे में बात करूंगा. वो ब्लॉग पोस्ट आई थी जनवरी 25, 2019 को. एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर अ वाइल नाउ एंड 2 हफ्ते पहले ही रिलीज अनदर ब्लॉग पोस्ट. इमेजिन आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो, नाउ आई हैव अनदर ब्लॉग पोस्ट टू टॉक अबाउट. सो आज हम इन दोनों ब्लॉग पोस्ट की बात करेंगे. फर्स्ट इज हाउ टू बी सक्सेसफुल. It's one of the most beautiful writings ever in regard to just finding yourself, particularly when you are running a company, when you are in the growth mindset, when you want to achieve big things. Understand this. जब Sam Altman OpenAI से पहले वो Y Combinator का पार्ट था. आई थिंक ही वॉज द प्रेजिडेंट एट Y Combinator. वो एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, उसको लोग ज्वाइन करते हैं एंड लाइक Y Com like helps groom like new startups. Sam Altman was associated with it for a long time, so he knows founders in and out. जब एक इंसान इतना ज़्यादा इंडस्ट्री में मतलब सेंटर में होता है, उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, उन्होंने चीज़ें खुद बनाई हैं, उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म गेम क्या होता है. उसके बाद वो एक ब्लॉग लिख रहे हैं जिसका बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट टाइटल है, हाउ टू बी सक्सेसफुल. इट्स अ वेरी, ये हाउ टू से मेरे को पता है आप में से बहुत लोगों को दिक्कत है. हाउ टू क्या बोल रहे हो तुम, कैसे बता सकते हो हाउ टू बी सक्सेसफुल. दिस गाय नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. और मतलब टू अ टेरिफाइंग लेवल दिस गाय नोज हिज शिट. अभी भी मैं वार्म अप कर रहा हूँ बिकॉज आई नो हाउ एक्साइटेड आई गेट अबाउट इट. So he starts the blog by saying, अभी ताज़ा प्रिंट आउट निकाला तो साथ में पढ़ते हैं. एंड एडिटर जी, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से आके पूछना है कि इस वीडियो की पेसिंग कैसी रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ. इस वीडियो की पेसिंग बहुत स्लो रखें. यू कैन इवन हैव द पार्ट्स ऑफ मी सिपिंग लाइक माई टी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल वन. ही स्टार्ट्स बाय सेइंग, I have observed thousands of founders and thought a lot about what it takes to make a huge amount of money or to create something important. Now see, बहुत concise बातें बोलेगा. For me, his writing is all about being concise. क्या तो जब बहुत पैसा चाहिए या कुछ important काम करना है. Usually people start off wanting the former, by which he means a lot of money, and end up wanting the latter, which is making something important. Here are 13 thoughts about how to achieve outlier success. Everything here is easier to do once you have achieved baseline degree of success through privilege or effort. अब देखो कुछ लोग, some people are born lucky, some people like put in like extra effort. तो ये भी इसने लिखा है कि या तो privilege है, effort है, एक baseline success हो तो उसके बाद बात करते हैं. And want to put in the work to turn that into outlier success. मतलब exceptional level of like अगर आपको success चाहिए. And it mostly applies to anyone.
तो इसने 13 पॉइंट्स लिखे. फर्स्ट इज कंपाउंड योरसेल्फ, कि यू कैन लुक फॉर कंपाउंडिंग एनीवेयर. कंपाउंडिंग इज मैजिक. एक्सपोनेंशियल कर्व्स आर द की टू वेल्थ जनरेशन. वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर आई गॉट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग वाज दिस ब्लॉग पोस्ट ओनली. बेसिकली इन्होंने करियर के बारे में एक चीज लिखी थी कि यू डोंट वांट टू बी इन अ करियर वेयर पीपल हु हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 years कैन बी एज इफेक्टिव एज पीपल हु हैव बीन डूइंग इट फॉर 20. योर rate of learning should always be high. As your career progresses, each unit of work you do should generate more and more result. Let me underline that. Ugly lines now. It's useful to focus on adding another zero to whatever metric you define as your success metric. Money, status, impact on the world or whatever. I'm willing to take as much time as needed between projects to find my next thing. But I always wanted to be a project that, if successful, will make the rest of my career look like a footnote. Now imagine this. मैं आपको इस लाइन की importance बताता हूँ. This is a line like my brother keeps like revisiting a lot. I also, हम बहुत इसकी लाइन के बारे में बात करते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ करो कि जब आप वो चीज़ कर लो तो उससे पहले आपने जो कुछ भी जीवन में किया वो फुटनोट बन जाए. मान लो वैभव मुंजाल आज डिसाइड करता है मेरे को ये चीज़ करनी है नेक्स्ट लाइफ में, और वो कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि जब मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी तो उसमें बस एक एस्ट्रिक्स के नीचे चलचित्र टॉक्स एंड एवरीथिंग एल्स वुड जस्ट बी एन एस्ट्रिक्स. आज की डेट में सैम ऑल्टमैन की अगर आप लाइफ से देखोगे तो अगर 2024 में कोई सैम ऑल्टमैन के बारे में लिखेगा तो ही वुडंट राइट कि सैम ऑल्टमैन इज लाइक द वाई कॉम्बिनेटर के बारे में 80% किताब या चैप्टर नहीं होगा. वो ओपन एआई के बारे में होगा, वो चैट जीपीटी के बारे में होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होगा. सो इट जस्ट मेड everything he was doing before OpenAI look like a footnote. Like I'm telling you guys, this guy knows what he's talking about to a terrifying level. क्योंकि मैं इसको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब मेरे को पता भी नहीं था भाई ये चैट जीपीटी बना देगा. मेरे लिए तो he was just a good guy जो इसको लेक्चर देने आते हैं और जो लिखता अच्छा है, और ये अभी इस लेवल पे प्रूव कर रहा है that he knows what he's talking about. So it's amazing. I think the biggest competitive advantage in business, either for a company or an individual's career, is long-term thinking with a broad view of how different systems in the world are going to come together. In a world where almost no one takes a truly long-term view, market richly values those who do. And he again and again thinks about and talks about long-term thinking. कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, अगले 20 साल में क्या होने वाला है. And then he says, trust the exponential, be patient and be pleasantly surprised. The second one I keep visiting a lot. मेरे को लाइफ में जब भी बहुत डर लग रहा होता है, इस लाइन ने मेरे को बहुत हेल्प किया. Have almost too much self-belief. Self-belief is immensely powerful. The most successful people I know believe in themselves almost to a point of delusion. या आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, आपके अराउंड जो लोग हैं बहुत ज़्यादा delusional होंगे. डिलुलू इज दी ओनली सेलुलू. मेरे को एक्चुअली इस फ्रेज का मतलब ये भी बहुत रिसेंटली पता चला था. कल्टिवेट दिस अर्ली एज यू गेट मोर डेटा पॉइंट्स दैट योर जजमेंट इज गुड एंड यू कैन कंसिस्टेंटली डिलीवर रिजल्ट्स. ट्रस्ट योरसेल्फ मोर. आई नो कि आपको भी ये कोई नई बात नहीं है, आपको भी आपके टीचर ने, मम्मी पापा ने, दोस्तों को लोगों भरोसा रखो. बट द वे ही सेज इट ना, हैव ऑलमोस्ट टू मच सेल्फ बिलीफ. मतलब इतनी कि लोगों को लगे कि आप पागल हो. गेम वो है. और मैं ये सुनता हूँ ना तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है. लाइक अगर मेरे को किसी गेस्ट को बुलाना है चलचित्र पे, डर लग रहा होता है मैसेज भेजू कि नहीं भेजू, मैं भेज देता हूँ. कल ही ऐसा कुछ हुआ कि मैं डरा हुआ था एंड आई वाज लाइक कि नहीं कर लेते. एंड देन मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ 30 minutes आई क्लोज 3 वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट फॉर माई पॉडकास्ट. एक और मेरे को बहुत बड़े को करना था तो मैंने उनको डायरेक्टली कॉल कर दिया. उन्होंने उठाया नहीं, वो बात अलग है. बट आई एम टेलिंग यू, सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, it's hard to let yourself have contrarian ideas about the future. Beautiful line. कि जब आप खुद पे भरोसा ही नहीं करते तो आप जीवन के बारे में कॉन्ट्रेरियन ओपिनियंस कैसे सोचोगे जब पूरी दुनिया एक चीज़ कह रही है और अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को ऐसा लगता है, तो जब सेल्फ बिलीफ नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है वाली आवाज़ तो बहुत जल्दी दब जाएगी. सो या यू नीड टू हैव टू मच सेल्फ बिलीफ. एक और लाइन पढ़ता है इसमें. Most highly successful people have been really right about the future at least once when the people thought they were wrong. I have lived these lines because मैं at least
50 से ज़्यादा बार इस आर्टिकल को पढ़ चुका हूँ, ये मेरा बुक मार्क्ड है कि प्रीविजिटिंग इट। तो ये जो बात बोल रहा है ना कि आप जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तो जीवन में एक बार ऐसा कुछ होगा जब सबने सोचा था आप गलत हो बट आप सही हो, वही सेल्फ बिलीफ है। देन अदर पॉइंट इज लर्न टू थिंक इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे केस में इन्होंने चीज़ लिखी, आई विल फेल मेनी टाइम्स एंड आई विल बी really right once is the entrepreneur's way. You have to give yourself a lot of chances to get lucky. One of the most powerful lessons to learn is that you can figure out what to do in the situations that have almost no solutions. The more times you do it, the more you will believe it. Grit comes from learning you can get back up after you get knocked down. मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ यार पढ़ते पढ़ते। Grit comes from learning you can get back up after you've been knocked down. Fourth is the reason why people hate self-help and all these things. Get good at sales. Self-belief alone is not sufficient. You also have to be able to convince other people what you believe. ये जो अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. All great careers to some extent are sales jobs. तो मतलब वो ये कि आप किसी गेस्ट के पास जा रहे हो या अपने बॉस के पास जा रहे हो, मैनेजर के पास जा रहे हो, कस्टमर के पास जा रहे हो, सब कुछ सेल्स ही होता है. सो उसमें फिर उन्होंने बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक और इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, माई अदर बिग सेल्स टिप इज शो अप इन पर्सन वेन एवर इट्स इम्पॉर्टेंट. वेन आई फर्स्ट started out, I was always willing to get on a plane. It was frequently unnecessary, but 3 times it led to career-making turning points for me that otherwise would have gone the other way. I also cannot stress enough about this one. The idea of like getting on a plane or getting in a taxi, you guys are underestimating how it can change life. I don't know if you are or not, but मेरे को पता है, मेरे अराउंड बहुत लोग करते हैं. And the more I am also growing, 30 का होने वाला हूँ कुछ महीनों में, I am realizing ये बड़ी चीज़ है. It changes things. The next is make it easy to take risks. मैंने एक TEDx talk दी थी, मेरी लाइफ की पहली TEDx talk थी लास्ट मार्च में. तो मैंने ये लाइन बोली थी वहाँ पे, जो इस पैराग्राफ की पहली लाइन है, Most people overestimate risk and underestimate reward. और जब भी मैं डरा हुआ होता हूँ ना, मैं इस चीज़ के बारे में बोल रहा था. जब मेरे को लगता है ये लोग क्या कहेंगे, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आई जस्ट थिंक अबाउट दिस लाइन. और फिर इसमें इन्होंने बताया कि वाई यू शुड टेक रिस्क अर्ली ऑन इन योर करियर, वो कैसे हेल्प करता है. एंड देन ही हैज टॉक्ड अबाउट फोकस, देन ही हैज टॉक्ड अबाउट वर्किंग हार्ड. और इसमें भी आपको कुछ ऐसी इनसाइट्स मिलेंगी जो नॉर्मली नहीं मिलती है, इवन दो टाइटल्स आर वेरी नॉर्मल. देन ही हैज टॉक्ड अबाउट अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स, बी बोल्ड. I believe that it's easier to do a hard startup than an easy startup. People want to be a part of something exciting and feel that their work matters. कि मतलब अगर सारी दुनिया मीम कंपनीज चालू कर रही है, and if you want to start a gene editing company, then do that and don't second guess. Follow your curiosity. Things that seem exciting to you will also seem exciting to other people. ये तो इस एपिसोड के व्यूज बताएंगे. The next one also. It's just like मेरा बहुत nostalgia आ रहा है, even if like I might have read this article last month only, because every time I read it, I'm like क्या बातें बोली हैं यार इसमें. A big secret is that you can bend the world to your will a surprising percentage of time. Most people don't even try and just accept that things are the way they are. People have enormous capacity to make things happen. A combination of self-doubt, giving up early, and not pushing hard enough prevents most people from ever reaching anywhere near their potential. Ask for what you want. You usually won't get it, and often rejection will be painful. But when this works, it works surprisingly well. To be willful, you have to be optimistic. Hopefully, this is a personality trait that can be improved with practice. I have never met a very successful pessimistic person. The next is be hard to compete with. उसके बाद है build a network. और ये भी बहुत important चीज़ है. One of the best ways to build a network is to develop a reputation of really taking care of the people who work with you. Be overly generous with sharing the upside. It will come back 10x. क्या line है?
Define yourself by your strengths, not by your weaknesses. And इनके एक दो tweets भी है कि most people like think too much about their weaknesses. इसमें भी शायद ऐसे कुछ लिखा है, acknowledge your weaknesses and figure out how to work around them, but don't let them stop you from doing what you want to do. I can't do X because I'm not good at Y is something I hear from entrepreneurs surprisingly often and almost always reflects a lack of creativity. The best way to make up for weaknesses is to hire complementary team members instead of hiring just people who are good at the same thing as you are. The next is you get rich by owning things. The biggest economic misunderstanding of my childhood was that people got rich from high salaries. Though there are some exceptions, entertainers for example, almost no one in the history of Forbes has gotten there with salary. You get truly rich by owning things that increase rapidly in value. This can be a piece of business, real estate, natural resource, intellectual property. Time only scales linearly. Last, be internally driven. Most people are primarily externally driven. They do what they do because they want to impress other people. This is bad for many reasons. फिर उन्होंने reasons explain किए हैं. The most successful people I know are primarily internally driven. They do what they want to do to impress themselves and because they feel compelled to make something happen. After you have made enough money to buy whatever you want and gotten enough social status that it stops being fun to get more, this is the only force I know that will continue to drive you to higher performance. You will define your success by performing excellent work in the areas that are important to you. The sooner you can start off to go in that direction, the further you will be able to go. It's hard to be wildly successful at anything you aren't obsessed with. So ये इनका blog 1 है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था और मैंने बहुत सारे इसके almost मैंने 60-70% out loud read भी किया. And I would strongly recommend जब आप ये पढ़ो इसका प्रिंट आउट निकालो. देखो मैं आप लोगों को ना सेल्फ हेल्प का एक स्कैम बताता हूँ कि किताबें बिकती हैं अगर आप कुछ हाउ टू लिखोगे एंड इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव नॉट हैड अ गुड सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग एक्सपीरियंस, इसलिए दे आर वेरी प्रिवी टू द आइडिया और दे आर वेरी अलर्ट अबाउट द आइडिया ऑफ रीडिंग मोर सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि एक टाइम के बाद बातें रिपीट होने लग जाती हैं. तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ें स्किप कर देनी चाहिए. बट ये जो न्यू एज फाउंडर्स आए हैं, न्यू एज थिंकर्स आए हैं जो ट्वीट मेंटालिटी से सोचते हैं, कभी कभी इनकी बातें बहुत तोड़ होती है. अब जैसे एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत है, नवल की कोई भी किताब इतनी मोटो नहीं है क्योंकि उनको जो बातें बोलनी थी वो इतनी एक पतली बुक में आ गई हैं. सैम ऑल्टमैन का सेम है, 5 पेज के एक आर्टिकल में इन्होंने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो बहुत लोग 500 पेजेस की किताबों में भी नहीं बोल पाते. एंड दैट इज़ व्हाई यू नीड टू हैव प्रिंट आउट ऑफ दिस. That is why you need to have printouts of all the great blog posts out there, because आपको tangible copies चाहिए इन चीज़ों की, and then you can revisit it, like think about the lines again and again. क्योंकि मैं बता रहा हूँ particularly इस post को लेके there is a lot of thought to it. और आप कभी कुछ कर रहे होगे और आपको realize होगा कि हाँ यार you only get rich by owning things, या आपको realize होगा हाँ यार बोल्ड होना कितना ज़रूरी है या इंटरनली ड्रिवन होना कितना ज़रूरी है. और उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, जो इलॉन मस्क के एग्जांपल दिए हैं, एयरबीएनबी के एग्जांपल दिए हैं, आई अप्रिशिएट हाउ दिस गाय हैज नेवर रिटन अ बुक बट ही जस्ट राइट्स ब्लॉग पोस्ट एंड ही नोज कि हाँ इसमें मैं अपनी बात बोल दूँगा. अब सिमिलरली 2019 में जब इन्होंने लिखा था नो वन न्यू ऑफ हिम एटलीस्ट इन द मेन स्ट्रीम. अब इनका अगला ब्लॉग पोस्ट आया 2024 दिसंबर में. 2024 दिसंबर के बाद इनकी लाइफ में इतना कुछ हो गया. He was the CEO of OpenAI. He was fired as the CEO. Then he went to Microsoft. Then he came back to OpenAI as the CEO. तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में हुआ. एंड उसके बाद इन्होंने वापस एक ब्लॉग पोस्ट लिखी which reads, "What I wish someone had told me." इससे रिलेटेड मैं आपको इनकी एक और लाइन में बताऊंगा, बिकॉज पहले बिफोर वी गेट टू दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक टेल यू द काइंड ऑफ स्नैपशॉट्स आई हैव टेकन ऑफ ऑल द पोस्ट दैट आई हैव सेव्ड ऑफ हिज ओवर द ईयर्स. इनका जैसे एक ट्वीट है कि आई स्टिल अंडर एस्टिमेट द कंपाउंडिंग पावर ऑफ रैपिड एग्जीक्यूशन एंड आइटरेटेड लर्निंग फीडबैक लूप. A commitment to this over the course of a career is the closest thing you can get to a guaranteed success. सिंपल सी बात है बट बहुत भारी बात है ये. इन्होंने एक बार और एक ट्वीट किया था, व्हेन यू लर्न दैट यू कैन लर्न एनीथिंग यू आर विलिंग टू टेक ऑन एनीथिंग, एंड व्हेन यू लर्न दैट यू कैन विन विद एग्जीक्यूशन स्पीड अलोन यू आर विलिंग टू टेक ऑन एनीवन.
फिर उन्होंने उस पर रिप्लाई किया था कि यू कैन सक्सीड बाय आउटस्मार्टिंग और आउटवर्किंग पीपल, बट टू रियली सक्सीड यू नीड टू हैव बोथ. देन इनका एक मैंने ट्वीट को वो किया हुआ है, मूव फास्टर, स्लोनेस एनीवेयर जस्टिफाइज स्लोनेस एवरीवेयर. 2021 instead of 2022, this week instead of next week, today instead of tomorrow. Moving fast compounds so much than people realize. You can and you should be extremely thoughtful and still move fast. The difference is active thinking versus passive thinking. एक इनका मैंने सेव किया हुआ है कि pay attention to who you have the highest bandwidth conversations with. Work with these people any way you can. इन्होंने 2014 में एक ट्वीट लिखा था कि any opinion on the odds that Elon Musk will at some point be the richest person in the world, and again it happened. Long term thinking. Then इनका एक ट्वीट है, the underrated and acquirable founder superpower. The selection of words, underrated and acquirable founder superpower. The ability to stay calm while a hurricane of crisis turns around you. Then इनका एक ट्वीट है, try a lot of things and do more of what works. Work on things that are interesting but not prestigious. Follow the path as it unfolds. Don't get sucked into the trap of only feeling like you can work on the problem that your peers say is the most important and feeling immobilized if you can't do that right now. It's fun when a company is doing far better than external perception and everyone who works there has a shared secret of knowing that they are going to crush it. Another one, this is in my favorites. I failed pretty hard at my first startup. It sucked and I'm doing pretty well on my second. The thing I wish someone told me during the first one is that no one thinks about your failures as much as you do. And that as long as you don't psych yourself out, you can try again. I'm just constantly smiling. These have really helped me. Now let's read about the other thing that he wrote, what I wish someone had told me. इसमें 17 पॉइंट है, आपको सारे पढ़ने चाहिए. But the first one is optimism, obsession, self-belief, raw horsepower and personal connections are how things get started. Cohesive teams, the right combination of calmness and urgency, and unreasonable commitment to how things get finished. Long-term orientation is in short supply. Try not to worry about what people think in the short term, which will get easier over time. I need to फिर यही वो चीज़ कहते हैं, it's easier to build a hard startup than an easy startup. It is easier for a team to do the hard thing that really matters than to do an easy thing that really doesn't matter. फिर एक है, incentives are superpowers. Use them and set them carefully. Concentrate your resources on a small number of high conviction bets. This is easy to say but evidently hard to do. You can delete more stuff than you can think. I've been thinking about this point a lot lately. Particularly जो हम चलचित्र पे भी करते हैं उस सेंस में थोड़ा. Then the next point, communicate clearly and concisely, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ because he talks so concisely. Fight bullshit and bureaucracy every time you see it and also get others to do it. Outcomes are what count. Don't let good process excuse bad result. Spend more time recruiting. Take risks on high potential people with a fast rate of improvement. Look for evidence of getting stuff done in addition to intelligence. Superstars are more valuable than they seem, but you have to evaluate people on their net impact on the performance of the organization. Fast iteration can make up for a lot. It is usually okay to be wrong if you iterate quickly. Plans should be measured in decades and execution should be measured in weeks. अगला वाला है ना, आज मैं गाड़ी चलाते हुए भी सोच रहा था कि डोंट फाइट द बिजनेस इक्विवेलेंट ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स. ये मेरे को इसका मतलब इसलिए पता है बिकॉज आई थिंक ही काइंड ऑफ यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ इट इन द लेक्चर सीरीज कि अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो और अगर आप कोई नया रूल लेके आते हो कि हम अलग तरीके से कंपनी चलाएंगे, कि दिस पर्सन डजंट रिपोर्ट टू अ मैनेजर डजंट रिपोर्ट टू द बॉस और द फाउंडर, दिस पर्सन रिपोर्ट्स टू दिस पर्सन, देन दिस पर्सन रिपोर्ट्स टू दिस पर्सन, और हर जने का एक बॉस है. एंड देन ऑल्टमैन सेड ये सब हरकतें मत करना क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स है बिजनेस के जिस वजह से वो बिजनेस होते हैं और जो ओवर द ईयर्स तैयार है उनको चैलेंज मत करो. लॉज ऑफ फिजिक्स के जैसे लॉज है ना कि जो न्यूटन का हो गया और अदरवाइज हो गया, ऐसे बिजनेस के कुछ लॉज है, उनके साथ पंगे मत लो. बिकॉज अगर आप उनको जैसे अप्लाई करना वैसे ही करोगे तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे आप उनको गलत प्रूव नहीं कर पाओगे. एंड इवन इफ यू कैन डू, यू शुडंट be focused there. Then another one is also right. Inspiration is perishable. This is something Naval also says.
and life goes by fast. Inaction is particularly insidious type of risk. I love the next one. But like it hits you all the more because इस वाले उन्होंने कोई बहुत technical चीज बोली होगी और फिर he says it. Number 16, get back up and keep going. Grit. And the last one, working with great people is one of the best parts of life. तो यार ये बेसिकली वर्ल्ड ऑफ सैम ऑल्टमैन है एंड द वर्ल्ड शुड ऑल्सो टॉक मोर अबाउट his writings and the yogdan he's giving to the founders there by being so concise and succinct with his words. And he really inspires me. It really does. Like है मतलब ये बहुत ही दिल के करीब चीज़ है. And I'm glad I have a platform where I can come and just like talk about without worrying कि कितनी देर का वीडियो है, इतनी देर में ख़त्म करना है, इसकी रील कटेगी नहीं कटेगी. हमें वो सब भी सोचना होता है, but there are times when I'm like I don't care. And this is one of those videos. I would request to the editor again, keep most of the parts of this. So yeah guys, take Sam Altman seriously. This guy is the real deal. I'll see you guys soon with another episode of Writings on the Wall, or maybe a live stream or a short or a reel. कहीं ना कहीं तो आप मेरे को देखोगे. Until then, keep following Kitabi Comments, Chalchitra Talks, all our channels. Become a member. What cool WhatsApp clubs हैं हमारे, book club, movie club, music club. Do you guys know about these? If not, click on chalchitratalks.com, buy our subscription, buy a yearly subscription, and I'll see you in the WhatsApp clubs. Bye.